आज हम मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 4 अक्टूबर को। इसलिए आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक का बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं। आपके शहर की आवाज, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास, सुनते रहो रेडियो द्रास। हाय एंड हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम में। आप सबको बताते चले, रेडियो द्रास 90.4 एफएम की अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ रूबरू रहते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल है। खासकर अगर बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक हम मनाने जा रहे हैं 4 अक्टूबर को, तो इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो पे बहुत ही अजीम शख्सियत जुड़े हैं। नियाज खान साहब जो वाइल्ड लाइफ स्कॉलर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो द्रास से बात करने के लिए। सर बात करें अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में, खासकर अगर लोकल फोना स्टोरीज के अगर हवाले से बात करें, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स को जो आपको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सलीम सर, आप ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड एक प्लेटफॉर्म देने के लिए टू tell about the wildlife and its importance. Hi everyone, I'm Niazul Hassan Khan. I'm a local resident of Kargil. I'm a PhD scholar from Wildlife Institute of India, and I'm currently a principal investigator of Bombay Natural History Society in Ladakh project, working with the Indian Army at different conservation and management aspects. So talking about the wildlife of Ladakh, जो which is very unique, जो हमारे लद्दाख का wildlife है, and because the geography जो है लद्दाख का बहुत ही uniquely distributed है by nature. So we are in between the Tibetan plateau and the greater Himalayas. So with this we have a wildlife of around wild animals, you say around 36 mammals पाए जाते हैं, जिसमें most of them are endangered, some are endemic also, and recently few new records are also done, जिसमें golden jackal, common leopard और Tibetan blue bear भी हमारे रिकॉर्ड में आए हुए हैं लद्दाख में। और जैसे बर्ड्स भी 340 बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं हमारे लद्दाख में, और 1200 से ज़्यादा प्लांट फ्लोरा स्पीशीज़ पाए जाते हैं। And as you are aware, जो Kargil है, it's a sandwich between pure Tibetan plateau and the greater Himalayas. So it also have a unique diversity of wildlife. जिसमें हमारा सबसे important, which we consider as a charismatic flagship species, the Himalayan brown bear, जो कि हमारे पूरे द्रास में, सुरु वैली और जांस्कर वैली में, और इवन हमारे बुदखरबू वाकामुलबेक एरिया में भी पाए जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर नियाज साहब। जैसे आपने कहा कि लद्दाख का वाइल्ड लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह लद्दाख ख़ुद एक खूबसूरत जगह है और इसमें वाइल्ड लाइफ भी है। ख़ासकर अगर आज के सेगमेंट के अगर हवाले से बात करें, तो रेडियो द्रास 90.4 की टीम के अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, अलग अलग सेगमेंट के माध्यम से हम रूबरू रहते हैं। सर आज इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक पे हम मनाने जा रहे हैं सर, फोकसिंग ऑन द एनिमल लाइफ, खासकर जो लोकल फोना स्टोरीज होती है। आपने कहा कि आपका रिसर्च हिमालयन ब्राउन बेयर पे है, तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएंगे सर, खासकर किस तरह की स्टोरीज, खासकर फोना स्टोरीज की अगर बात करें। सो फाउना में मेजरली हमारे लद्दाख में, जैसे अभी रिसेंटली स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन एस्टिमेशन हुआ था, उसमें पाया गया कि हमारे कारगिल में अराउंड 127 स्नो लेपर्ड्स, which is a very good number in Kargil. Yes. As per you see the area which is only 14,000 square kilometer. So इसके हिसाब से, और जैसे कि brown bear है, which is one of the rarest animals that you find, and is the least studied animal as well, because of the high altitude conditions and all. Yes. और इनके the important thing about these animals is they play a very important role in balancing the ecology, the fragile ecosystem, and they are the ecological drivers of this landscape. So इन animals को protect करना, इनके status जानना, it's very important for the conservation and the protection of these animals. And talking about the stories, I would say
मेरे लिए पहले व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय रिसर्च Journey. ऑन ब्राउन बेयर्स, Yeah. मुझे लगा था कि ये एक एनिमल ऐसा, मतलब क्या ही इनका इतना रोल होता होगा हमारी इन्वायरमेंट में. Environment. बट व्हेन आई डिड द हैबिटेट assessment, when I did the diet analysis of this species, it was Yes. found that majorly this animal particularly is dependent on the plant-based materials, and these are seeded plants mostly. सो जैसे हमारा वाइल्ड रोज है, लॉनीसेरा है, जो जो ये खाते हैं खाना, वो जब वो उसके रोज हिप्स को खाते हैं, सो उनके जो उसमें उसके अंदर सीड्स होते हैं, Seeds. उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है कि दे हैव अ डिफरेंशियल डाइजेस्टिव सिस्टम, जो और जब वो पूप करते हैं द सीड्स रिमेन इंटैक्ट, and when they fall on the ground, with proper the moisture and the air and the water, that grows into big shrubs, जिसपे आप you Yes. name it, from Yeah. butterflies to bees to all like big mammals, like हमारे even our livestock and Livestock. ungulates are dependent on these major plants. ग्रेट. Yes. सर बहुत खूब. अगर बात करें, अगर राइजिंग अवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें, इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ सर, कल्चरल और कंजर्वेशन अगर थीम की बात करें इसी पे, Yes. और राइजिंग अवेयरनेस, अब देखिए कोई भी, जैसे आप हिमालयन ब्राउन बियर की बात की, स्नो लेपर्ड की बात की, अच्छे नंबरात पे हमारे पास हैं, तो अबाउट द वेलफेयर या किस तरह का कंजर्वेशन जो है वाइल्ड लाइफ पे आप आई वुड से कल्चरल सिग्निफिकेंस, हम जैसे हमारा लद्दाख रेजिमेंट है, लद्दाख स्काउट है, हमारे वहाँ पे जो सिंबल रखा हुआ है, दैट इज एन आइबेक्स. यस. which is a symbol of stealth, which is a symbol of valor, which is a symbol of strength, बिल्कुल. because these significance are a great value to us as well, because Yes. these animal itself holds a great importance. So definitely हमारे यहाँ पे cultural significance है. जैसे snow leopards का भी बोलते हैं, snow leopard is one of the beautiful animals you can see in the mountains of Ladakh. And apart from that, I would say we should also divert our sights to our our thinking to small mammals as well. जैसे हमारे मैरमेट्स हैं, छोटा सा एक मैरमेट होता है, जब हम उनको मीडोस में देखते हैं, we get fascinated by the sightings, so Yes. Sir, the next question is the promotion and kindness या habitat focus, खास करके हिमालयन ब्राउन बेयर वाइल्ड लाइफ. promotion, I would say, see, एनिमल हमारे इस लैंडस्केप में हमसे बहुत पहले रहते थे, एंड वी शुड रेस्पेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन आवर लैंडस्केप. आई एम वेरी हैप्पी सलीम जी कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स Dras has become the world's best brown bear destinations, sighting destinations. Yes. And people across different countries comes to visit Dras just to see brown bears in this beautiful landscape. So yes, absolutely, हम यहाँ के लोगों में perception में बहुत changes आए हैं with terms of conservation and promotion based on ecotourism. And people in Dras, I see currently, has adopted a lot of homestays, which is a very positive things towards accepting and even tolerating the bears in their landscape. And apart from that, I would say ki department also should encourage such activities, which is they are absolutely doing it. But the level of encouragement and the engagement with the community is very important at this level for the conservation of species like the brown bear, because if we conserve the umbrella species, we can conserve all other lower mammals, even birds and all that animals as well. And it is also important in terms of Kargil, I would say, because Kargil has no protected areas. It's very sad to say, because but at least we can try species specific conservation in these areas. Yes. Yes. Thank you, sir. Question was supporting the conservation highlights need to protect the endangered species and the
ecosystem role? So, protecting the species, as I mentioned Yeah, earlier, जैसे कि ये animals कितना ecosystem में role play करते हैं, या जैसे snow leopard की बात करें कि snow leopard has some specific prey like blue sheep, ibex, ural, ibex जो हमारे द्रास में भी पाया जाता है. That's why snow leopard has been sighted. Like I would like to mention here that just a week ago I saw 2 snow leopards in the Mushku Valley. That Yeah, was this is good very news for surprising. all of us. And they were playing in the early morning. In the land, I was really fascinated with that. With that thought, I thought and thought came to my mind that yes, there are diversified wildlife in this landscape. Yes. Thank you. The way the participate or the volunteer, yeah, separate awareness through media, yeah, through community. So the engagement is currently it's going in a very exponential way, and there are organizations like WWF, BNHS itself, and the Himalayan Ibex Trust, and local organizations, which I really support. The Dras, which is doing an excellent job in Dras. Thank you. For the conservation of wildlife in this region. They are the core team which needs to be boosted for the engagement of the community and for the awareness to the youth, especially for the conservation of this landscape. Yes. Now the policy is the main question, sir. The policy change, the community engagement, the inspiration individual to take the action for the animal welfare. I would say if as a community we are collectively working towards a goal, it's the most possible approach that we can do, the community engagement, because they are the real custodians of this landscape, of the wildlife, of the flora and fauna that is found in this region. And engagement with the biggest setback I see here is different organizations are working in silos. They are working individually. But collective measure, if you want to see a result, we should engage in a collective process and a collective approach that will give a very positive result for the community and on a larger landscape. Because when you go to the northern, the eastern side of Drass, which is Dhadkan and all areas, they also have a very good potential of snow leopard tourism. So the engagement should not be restricted to only a specific site, but also on a broader scale in Drass. Thank you, sir. अब हम बात करें अगर स्टेटस ऑफ हिमालयन ब्राउन बियर या अगर प्रेडेटर्स की बात करें या हैबिटेट की बात करें तो कितना एक अहम रोल रहता है सर? See, as per brown bears, I would say with confidence that the brown bear status is in Dras. The thing is, there is no scientific, as of now, there is no population estimation done for the brown bears like we did for the snow leopards. Yes. And we should also the department, I would say, should definitely work on assessing the population of brown bear in whole Kargil region from Dras to Kargil, so we get an status. So on the basis of the status, we can work on the policies and the management in the core habitats of this region. सर आपका एक प्रोजेक्ट भी था सर, खासकर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको कैसे हम, क्योंकि काफ़ी केसेस भी आए, प्लीज इसके बारे में. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. व्हेनेवर आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी एरिया में चलिए जाइए विच इज़ न्यूली एस्टैब्लिश्ड बाय आर्मी, they didn't bring the dogs, right? They didn't bring अपने ट्रक में लेके, अपने कंटेनर्स में लेके वहाँ डॉग्स नहीं लेके आए. They are being subsidized because of the waste that is getting generated in those areas, where जिस पे I would say our next thing,
the waste management is very critical in these high military zone areas, I would say, because वहाँ पे अगर waste management करेंगे उससे we can control the dog population in our region with parallel programs like free ranging dog sterilization that happened in Dras, and more than 200 I guess dogs are being sterilized in Dras military zones with support from the Indian Army 14 Corps. And हमारा project biodiversity monitoring and conservation with Indian Army tha, and not in Dras but in all the bordering areas of Ladakh. We worked and assessed the dog population because they are, apart from habitat destruction, apart from anthropogenic impact, the dogs are the major threats to the wildlife. There are you must have seen some videos where dog has chased the marmots. You have some videos where dog attacked snow leopards, and there are so many cases of brown bear cubs and the yearlings are being chased by dogs. And it can cause the killing of the animal as well. So the controlling of free-ranging dogs in the bordering areas is very crucial. And on the same platform, we should also engage in conducting the organic waste composting things in different formations, or even in the villages as well, if we get the organic waste out there. So we deployed 2 organic waste composter machines, एक द्रास में एक न्योमा में deploy किया था army formation में, and they are really working well. And we should I really encourage the administration to adopt the organic waste composter machine in all the formations, all the units, so वहाँ पे waste generation कम हो, जिसकी वजह से subsequent dog population हमारे area में कम रहे and impact to the wild. बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और ख़ासकर बात करें अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी सर काफ़ी कोशिश कर रही है, ख़ासकर वाइल्ड लाइफ को लेके या इस तरह के प्रोग्राम से अवेयरनेस करने के, एक मास अवेयरनेस फॉर कम्युनिटी सेपरेट। सर एज ए वाइल्ड लाइफ स्कॉलर, अगर वाइल्ड लाइफ को देखा जाए, आज हम उनकी बात कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन द एनिमल्स लाइफ, बिहेवियर हमें कैसे देखना है, या उसका हैबिटेट में हमने ऐसे कुछ जगह देखे जहाँ पे या वाइल्ड लाइफ हो या स्नो लेपर्ड हो या बहुत सारे जानवर हैं जहाँ कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो उनका हैबिटेट पे जाते हैं. I get very saddened to see for the sake of one photograph they venture in the core areas of the wildlife, and it really disturbs them. You can see the behavioral ecology of the bear, all the major animals. They really get disturbed. If there are dens of the bears, they abandon it. If there may be some of the critical endangered animals as well, and just venturing in the core habitat is completely unacceptable. And the administration and the department should definitely, I would say here on, and this should reach to the department, that they should circulate an advisory and an SOP, proper SOP for all the photographers, filmmakers, whoever is going to the places of wildlife core habitats or even the wildlife areas. The advisory with strict regulations, otherwise they should be blacklisted from the region. Thank you, sir. Thank you. And one more thing I would like to add here, using this opportunity, is Dras has a very good potential in terms of wildlife, and you say the bears, the ibex, after almost 55 years that with the support from the department we could re-record the musk deer, जिसको हम कस्तूरी बोलते हैं हमारी भाषा में, in Dras, and they have a very restricted habitats,
and one of the core habitat is Mushko Valley. And if you allow people to go in the core habitat, they will definitely move out of their place and will again lose the animal. And there are a lot of transmission line constructions and linear infrastructures that is happening in the mountains, and they should be properly regulated with environment impact assessment. And there should be a steering committee where the scientific committee is there, where the local advisor is there, so that the proper engagement or the sanction or even the habitat should be protected in these landscapes, which is very critical. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नियाज सर, बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे लिसनर्स को, खासकर बात की वाइल्ड लाइफ को लेके, खासकर जैसे हिमालयन या ब्राउन बियर को लेके या स्नो लेपर्ड को भी लेके बहुत खुशखबरी है, खासकर पूरे लद्दाख रीजन के लिए, स्पेशली द्रास के जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं। जैसे सर का यही कहना है कि उन्होंने रिसेंटली देखा है स्नो लेपर्ड भी द्रास में। तो आखिरी सवाल रहेगा सर हमारा, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर रेडियो द्रास 90.4 FM के माध्यम से? हम अपने यूथ्स को क्या मैसेज देंगे एज एंगेज, किस तरह का रोल आने वाले टाइम में हम और भी इस वाइल्ड लाइफ को बेहतर बना सकते हैं? Yes. मेरे लिसनर्स के लिए एंड द यूथ्स के लिए आई वुड ओनली से दैट दिस इज नॉट एन एलियन animal, this is not an alien wildlife. They are the part of our living, they are part of our landscape. We should respect the wildlife, we should definitely protect the wildlife, we should definitely protect the habitat if it's getting destructed or if it's getting encroached as whatever the condition may be. And in terms of the Indian Army, so far I got really good support from the Indian Army for the conservation, and they are really positive in helping in whatever way they can do for the conservation of wildlife in our region, and really appreciate that. And in near future, we should all the local organizations should definitely engage with them for the conservation approach, and I hope they will give their best for the conservation of this landscape and the habitat. बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर आज के मैसेज अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ासकर जो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस को लेके जिस तरह इंडियन आर्मी का भी इनिशिएटिव रहा है, जिसका सर खुद का भी पिछले कहीं साल से कहीं टाइम से जो है ब्राउन बियर के लिए या वाइल्ड लाइफ के अवेयर कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को खासकर बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा, और साथ ही साथ आज हम मनाने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक 4 अक्टूबर को, इसलिए आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक का बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं, और आज एक वादा करते हैं कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, बचाएं और राइजिंग अवेयरनेस पहुंचाएं, प्रमोशन करें, उनको काइंडनेस या उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि इस पॉडकास्ट से ये भी निकला कि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स या वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स आते हैं जो उनके हैबिटेट में चले जाते हैं, जो उनके घर पे चले जाते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर, दैट्स नॉट अ गुड वे, एंड इट्स अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इतना बड़ा कानून है 1972 के एक्ट के हिसाब से, वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये बहुत बड़ा कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी उसके ऊपर अगर हम इस तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं। उम्मीद करेंगे आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा, और इस तरह के पॉडकास्ट के लिए आप रेडियो द्रास 90.4 FM को सब्सक्राइब, शेयर, और हमारे जो भी डेली सेगमेंट्स होते हैं आरजे शबनम का, आरजे शनाज का, उनके साथ आप रूबरू रहे। तो फिर मिलते हैं नए एक पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।